It's not visible yet, sir. Yeah, it's visible now, sir. Yes, sir. No. So, so let me just open this PPT. Okay, so what we have seen yesterday, we have started with a single phase, right? Transformer. Yes. Yes, sir. Okay, Yes, and sir. then Yes, sir. we have seen what is the working principle of the transformer, correct? And then how the transformer is made, then which are the types of the transformer, right? So this is the basic working principle. What is the basic working principle? On what principle transformer is working? Faraday's law of. Mu- Mutual Mutual induction. induction. Okay. So after that we have seen transformer ratio V1 by V2 is equal to N1 by N2 is equal to I2 by I1, right? And then we have seen the transformer equation, how the induced EMF is generated and what is the formula. So formula for that induced EMF is 4.4 over into N into F into phi M. Okay, and then we have seen couple of problems, and after that we have went with what types of transformers are there depending on the type of the core it is used, right? So whether it's core type transformer or whether it is shell type transformer, depending on the material used on which we do the winding, correct? And then we have seen that yes, the core or shell, right, that is not made up of a complete iron, but it is made up of single laminates which are stamped together. Is it correct? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, Yes, now sir. Yes. Now, why these are stamped to reduce the energy loss due to the eddy currents, right? So after that, we have seen the comparison that which transformer is good for what, right? So for lower rating, we are using core transformer, and summarizing, we can say that for higher ratings, we are using shell type transformer, right? And then depending on what type, depending on what is the working principle, we can use it as a step up transformer or step down transformer, or third one is your isolation transformer, which is basically used to transfer the energy from one circuit to another circuit without any electrical contact, right, or to reduce the noise. And then we can see that depending on the material used, okay, for construction of the core, we can again classify the transformers as iron core, ferrite core, or air core, correct? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, Okay. sir. sir. And finally, at the last, we have seen that we can again classify the transformer depending on its usage, whether it is used for power transfer. So power transformer depending on measurement transformer, and third one is your distribution transformer, right? And then yes, so this was the last slide which we have covered, and today let us start with equivalent circuits of the transformer. Okay. Now, what is equivalent circuit of the transformer? So let me see if there is anyone in the waiting room. So please join on time. Yeah. So what is equivalent circuit of the transformer? So the thing is that transformer is the electrical component. Is it correct? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now, as this is a electrical component, I can say that any electrical component can be represented by a circuit, correct? So, for example, I will just tell you that if in your room there is a fan and there is a switch, right? So, how you can just represent fan and switch? So, let us suppose fan you can represent it by R load, and then there is a switch you can represent it like this, correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, Lamp sir. is there, you can represent it by resistance. Okay, if fan is there, we have to represent it by a resistor as well as inductor. Why? Because your fan is having winding in it, correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this transformer we can represent it as by the electrical circuit. So in this topic we will be concentrating on drawing how we can draw the equivalent circuit of the transformer. Yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. And then the behavior of transformer may be conveniently considered by assuming by its equivalent circuit. Now, why we want to draw equivalent circuit? Because we need to
analyze the transformer. What is the input power? What is the output power? Is there any loss in the transformer? So ये सब हमें analysis करना है ना. So that's why we need to have to see the behavior of the transformer, we need to draw the electrical circuit of it. Okay, so let us see how we can draw the electrical circuit. Now see here what's happening, this is your transformer, and what is happening here, there is some primary windings, correct? Okay, here there are some primary windings, right? Here there is some primary winding. Okay, here there is some secondary winding. So this windings we can represent it by this windings we can represent it by inductor. क्या बोलेंगे हम इसको? Inductor. Okay. And similarly at the secondary side there are again windings, so this we can represent it by inductor. And for this is for symbol purpose transformer, and this यहाँ पर जो windings होंगे ना उसको हम inductor से replace करेंगे. Okay, so this is one parameter I can say. Any problem in this? Just No, sir. okay. No, sir. Now effect of leakage flux. Okay, so that flux will get leakage. Okay, that is proportional to the primary and secondary current, and its effective and its effect on the induced EMF, right? मतलब इसका मतलब ये है, ये मैं बाद में बताता हूँ, but the thing is yes, what happens, whenever current is flowing in this winding, so it will produce some flux. Okay, so this flux will get linked to the secondary because of this core, but some of the flux lines will go in the opposite direction. So can I say these flux lines are getting leaked? Yes, no? Yes, sir. So this is waste of energy. So that's why this is called as your leakage flux lines, or getting my point? Okay. So, we have to take in effect of this leakage flux also. Okay. Now, how I can draw the equivalent circuit of the transformer is very simple. We have to just this is not the electrical equivalent, but this is, you can say, the symbol of the transformer, right? Now transformer is having primary winding. So primary winding means what? एक copper ले लिया, उसको हमने गोल गोल करके winding बना दिया. So that copper will have its resistance? Yes, no? Yes, sir. So Yes, this sir. is R1 is nothing but resistance of the primary winding. समझ में आ रहा है? R1 is resistance of primary winding. समझ में आ रहा है? Yes, no? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Similarly, there R2 secondary winding है, right? So R2 is what? Resistance of secondary winding. समझ में आ रहा है कैसे represent किया हमने? Yes, sir. Okay, okay. Now, जो winding है, right? So it is nothing but, you can say that whenever I am winding the copper, then what will happen? It will act as an inductor, right? So it will have some inductance. So X1 is nothing but the equivalent inductance of primary winding, and X1 and X2 are nothing but reactance, or you can say the inductance of primary and secondary winding, and that is due to the leakage flux, correct? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So now in all I can represent the transformer like this. Okay, so there is a primary resistance R1, resistance of the primary, X1 inductance of the primary or reactance of the primary, or resistance offered by the inductor. Okay, and after that R2 equivalent resistance of the secondary winding, X2 equivalent inductance of the secondary winding. Is it correct? समझ में आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now of course ये प्राइमरी साइड है, तो प्राइमरी साइड में क्या होगा? I1 होगा, इनपुट करंट V1 होगा, इनपुट वोल्टेज I2 होगा, इनपुट आउटपुट करंट एंड V2 होगा, आउटपुट वोल्टेज. समझ में आया? Yes, Yes, no? sir. Yes, sir. Okay, okay. So any transformer, if you want to represent it or by a circuit, you can do it like this. Okay. Now, there will be some power loss whenever current will flow through resistance R1. There will be some voltage drop. So there will be I1 R1 voltage drop in the primary resistance, I1 X1 voltage drop in the primary leakage reactance. नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? Voltage drop across the inductor. नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? Voltage drop due to the leakage resistance. समझ में आया? Leakage reactance. Getting? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And what is I1 Z1? That is addition of these two, right? Addition of these two will contribute the total voltage drop in the primary. समझ में आया?
Yes, sir. Similarly, I2 R2 voltage drop across secondary resistance, I2 X2 voltage drop across secondary leakage, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया I2 Z2 voltage drop due to secondary impedance. Yes. Any problem? No, sir. Okay. So yes, now that was somewhat simplified. Now we can say that simplified equivalent circuit. Okay. So we will go for simplified equivalent circuit. Now we know that I1C. Now what happens? You know there are two loops. दो लूप है ना, इनपुट का अलग लूप है, आउटपुट का अलग लूप है. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. सो इनपुट और आउटपुट का अगर अलग लूप है तो फिर दो लूप हो गए. नाउ इफ आई वांट टू हैव अ सिंगल लूप then I should have the equivalent circuit, simplified equivalent circuit. Okay. So how I can draw the simplified equivalent circuit? So for that, what I'm doing now, we can replace R2 by inserting additional resistance R2 dash in the primary such that power absorbed in R2 dash when carrying the primary current is equal to the in R2 due to the secondary current. समझ में आया? नहीं समझ में आया? No, Okay. no, sir. Now it's very simple. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. So I will just write this is R1, correct? Yes, sir. This is R2, correct? Okay. Yes, sir. इसमें Yes, पावर sir. ड्रॉप कितना हो रहा है? What is the power which is getting dropped here? I1 square into R1. इसमें पावर ड्रॉप कितना हो रहा है? I2 square into R2, R2. correct? Okay, okay. Now इन दोनों में इक्वल पावर कब ड्रॉप होगा? इन दोनों I1 में इक्वल square पावर. I1 yes. square R1 is equal to I2 square R2. Okay, okay, okay. So now I want to write, right? So I want to write in such a way that I want to transfer this R2 here. थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये. R2 मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है and such that its power drop should be equal to this, करेक्ट? तो मैं इसको बोलता हूँ R2 डैश. R2 डैश समझ में आया? सुनिए फिर से मैं एक बार ये करता हूँ. मुझे ये यहाँ से रिमूव करना है और प्राइमरी साइड में लेना है क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही सर्किट बनाना है प्राइमरी साइड में. समझ में आया? तो Yes, sir. ये जो R2 है ना, ये R2 को मैंने लिख दिया R2 डैश, मतलब इसको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस सीन इन प्राइमरी साइड. R2 डैश मतलब क्या? रेजिस्टेंस R2 जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम कहां से देख रहे हैं? प्राइमरी से देख रहे हैं. गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what is the power drop across it? Power drop across it. क्या करंट फ्लो हो रहा है इसमें से? I1. So I1. what is power drop across this? This will be I1 I1 square square R1 plus R2 R1 dash. 2 dash. सुनिए R2 dash. और हमें ये इसके अक्रॉस का जो पावर ड्रॉप है ये कितना चाहिए? This should be equal to I2 square into R2. I2 square into R2, correct? Yes, no? Yes, sir. So ये बन गया मेरा ये इक्वेशन. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फिर से एक बार बोलता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है, ये R2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर डालना है. तो यहाँ से हटाकर यहाँ पर डालना है. तो मेरे सर्किट में जब मैं एलिमेंट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको नाम दे दूंगा R2 डैश. इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड. और इसमें उतना ही पावर होगा जो कि यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है. सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, इसमें पावर जो ड्रॉप हो रहा है इसको और इसमें पावर जो ड्रॉप हो रहा है इसको, दोनों को कंपेयर कर लिया. कंपेयर करने के बाद में मैंने क्या किया, R2 डैश का वैल्यू निकाल दिया. यहाँ पर R2 डैश इज नथिंग बट R2 एंड I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 स्क्वायर. तो ये हो गया एंड I2 बाय I1 इज इक्वल टू V1 बाय V2. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू R2 डैश. R2 डैश को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके. सो फिर मेरा सर्किट कैसे बनेगा? देखो प्राइमरी में क्या है आपका? R1 है. उसके बाद में क्या है आपका? अभी अभी जो हमने लिया R2 डैश है, बराबर है. एंड उसके बाद में ये क्या है आपका? X1 है. और उसके बाद में ये क्या है आपका? ट्रांसफार्मर है. ओके. और फिर यहाँ पर क्या आएगा? ये आपका X2 हो गया.
ओके, और इस यहाँ पर क्या आएगा अभी बोलिए, R2 आएगा 2 या नहीं आएगा? आएगा सर। नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने इसका नहीं आएगा। इक्विवेलेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो फिर इट विल नॉट कम हियर। समझ में आया? Yes, Okay. sir. Yes, sir. So what is the equivalent resistance then? Both the resistance are in series, so equivalent resistance will be R1 plus R2 dash. So can I say the equivalent resistance of the complete transformer is R1 plus R2 dash, and R1 plus R2 dash के जगह से मैं ये equation हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, R2 divided by V1 by V2 का whole square, correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, So this sir. is equivalent resistance of the ट्रांसफॉर्मर सीन फ्रॉम द प्राइमरी साइड। समझ में आया? प्राइमरी साइड को हमने लेके गए ना, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी आप सेम थिंग कैन यू डू सेम थिंग विथ द सेकेंडरी इंडक्टर। अभी हमने रेजिस्टर को ट्रांसफर करवा दिया, अभी नेक्स्ट टाइम किसका है? अभी ये जो x2 है उसको अगर हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है, सो सिमिलरली आई कैन राइट x2 dash right as x1 by x2 into v1 by v2 whole square, same funda, same, correct? Yes, sir. ओके, तो देखिए अभी मेरा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा पहले नॉर्मल इक्विवेलेंट था, कैन यू कोरिलेट दिस थिंग? दिस इज x1, दिस इज r1, दिस इज x2, दिस इज r2। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Okay, now what I'm doing, I have transferred R1, और ये जो R2 था ये यहाँ पर आ गया, तो फिर मैं क्या बोलूंगा इसको, R2 dash, करेक्ट? एंड देन यहाँ पर है X1, एंड देन ये X2 को भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, क्या बोलूं मैं इसको, X2 dash। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो फिर मेरा जो दो सर्किट था वो एक ही सर्किट में आ गया ना अभी, एंड Yes, आर sir. इक्यू इज व्हाट, R1 plus R2 dash. and R2 X dash. eq is what, X1 plus X1 plus X2 X2 dash. dash। ये सर्किट मेरा सिंपलीफाई हो गया, Yes, sir. Yes, करेक्ट sir. है ना? सो that's why this is called simplified equivalent circuit of the transformer. Okay, now I will go on next PPT and then you can get the clear idea about that. So can I say equivalent circuit REQ is nothing but जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था वो है, राइट? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, this is REQ and then this is XEQ and then this is your circuit, correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, REQ is this, XEQ is this. So here I can say REQ and XEQ, right? So this is your equivalent circuit and which is seen from the primary side. Yes, no? समझ में आया? Yes, And sir. of course, always if you want to calculate the total impedance, then you need to take ZEQ is nothing but REQ square plus XEQ square. So this concept I will tell you in the next class, right? But yes, for now you just consider that total impedance of this circuit is nothing but ZEQ. It is square root of resistive part plus reactive part. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Any problem in this? No, sir. Okay. Now now similarly, can we transfer the impedance? Yes, we can also transfer the impedance, right? For example, देखिए R1 X1 है, इसका impedance क्या है आपका, Z1 है। R2 X2 है, इसका impedance क्या है आपका, Z2 है। तो ये Z2 को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना? कैसे? यहाँ पर आपका Z1 है, यहाँ पर क्या आएगा आपका Z2 dash, करेक्ट? Yes, no? Yes, sir. And total ZEQ will be equal to Z1 plus Z2 Z2 dash, dash. है ना? Yes, no?
Yes, sir. Yes, sir. So सेम है, सिर्फ उसको इम्पिडेंस के फॉर्म में बोला गया है. एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. सिंपलीफाइड इक्विवेलेंट sir. सर्किट समझ गए हो आप? यस. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है. सर सिंपल है. Yes, sir. ओके. नाउ अभी देखिए, आपको ये Z1, X1, R2 ये क्या है, ये आपको मैं जब एसी सर्किट पढ़ाऊंगा ना तब आपको डिटेल में बताऊंगा. ओके, आई विल टेल यू इन डिटेल. यस, नो? Okay, sir. Yes. Okay. Now voltage regulation of a transformer. Voltage regulation of a transformer. So voltage regulation of a transformer is defined as, always हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. हमने जब डायोड पढ़ा था तभी भी वही देखा था. What is voltage regulation? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज. इसका मतलब ये है, देखिए नो लोड फुल लोड का मतलब बताता हूँ मैं आपको. ओके, देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है या नहीं है? यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आएगा आपका, बराबर है, और ये V2 है आपका, आउटपुट वोल्टेज है ना? Yes, यस, sir. नो? अब Yes, sir. Yes, जैसे sir. आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर मैंने 230 वोल्ट्स दे दिया. ओके, अभी यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी कनेक्ट किया है क्या मैंने? आई हैव कनेक्टेड एनीथिंग इन द आउटपुट? नो. No, sir. मैंने क्या किया, सीधा एक वोल्ट मीटर ले लिया एंड आई हैव मेजर्ड द वोल्टेज. सो दिस voltage when I am not connecting any load, so that voltage is called as VNL. मतलब क्या? No load voltage. समझ में आया? Yes, Yes, sir. no? Yes, sir. अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने लोड ले लिया, मतलब आपका जो लैपटॉप का चार्जर है उसको लैपटॉप लगा दिया, तो RL लोड लगा लिया, एंड आफ्टर दैट अगेन आई एम मेजरिंग द वोल्टमीटर voltage. So this voltage, second voltage, I will call it as full load voltage. समझ में आया? Yes, sir. Apply the load to the transformer, measure the output voltage, full load voltage. Don't apply anything to the transformer, measure just what is giving at output voltage, that is your full load voltage. Yes, no, any problem in this? No, sir. No, your sir. screen is lagging. So no load voltage, full load voltage, अगर आपको concept समझ में आया, so this is very simple that yes, okay, so this is very simple that वोल्टेज रेगुलेशन इज नो लोड वोल्टेज. बोलिए क्या लिखूं मैं इसको? VNL माइनस फुल लोड वोल्टेज VFL डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज VNL. सो VNL minus VFL divided by VNL, right? So this is your voltage regulation. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. So what is secondary voltage on no load? What is secondary voltage on no load? V2, है ना? देखिए एक सिंपल बात बताता हूँ मैं आपको. I will just go to back PPT. Okay. Let's go back here. Now देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका EMF इंड्यूस हो रहा है. यहाँ पर E1 क्या है? EMF induced is E1. Yes, no? Yes, sir. And EMF induced here is E2. Okay. Now when I am not connecting any load at that time, load connect कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? No, sir. No, sir. So if I am not connecting any load, what is this? Open circuit, है ना? Yes, no? Yes, 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 sir. sir. ओपन सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है. No, sir. No, sir. कब? व्हेन आई एम कनेक्टिंग नो लोड, है ना? तो फिर इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. No, sir. No, sir. सो कैन आई से E2, जो कुछ वोल्टेज मुझे मिल रहा है, सो V2 इज इक्वल टू E2, मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू E2. सो E2 को मैं बोल सकता हूँ नो लोड वोल्टेज, करेक्ट? Yes, sir. VNL is nothing but E2, है ना? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये कंसेप्ट समझिए आप, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नोबडी विल टेल यू. नाउ व्हेन आई एम कनेक्टिंग दिस लोड RL, ओके, व्हेन आई एम कनेक्टिंग दिस लोड RL, ये जो E2 है, E2 लेटेस्ट है 100 वोल्ट है, तो इसमें लेटेस्ट सपोज 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इस वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर जो कुछ वोल्टेज आ रहा है कितना आएगा यहाँ पर? 98 volts. 98. And what is voltage measured across these 2 points? I will call it as V2. So can I say V2 as full load voltage?
Yes, sir. Yes, sir. नो लोड वोल्टेज E2, फुल लोड वोल्टेज V2, समझिए. And now I will just move on to next PPT. So that's why voltage regulation is nothing but बोलिए क्या आएगा ये, E2 no load voltage minus full load voltage divided by no load voltage. Correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. V1 by V2 is equal to N1 by N2. So therefore, V2 is equal to N2 by N1 into V1. And when this is no load, at that time V2 is equal to E2. हमने अभी देखा है. Correct? Yes, sir. So Yes, E2 sir. की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ये फॉर्मूला डाल दूंगा. तो जहां जहां E2 है वहां वहां ये फॉर्मूला डालेंगे. And then if you simplify, you will get this voltage regulation formula. समझ में आया? Yes, sir. इसको बोला है V2 डैश, इसको बोला है V2 डैश. ओके? Yes, no? Yes, sir. So like this you can calculate the voltage regulation for transformer. चलेगा? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now very simple concept. Transformer. Okay, transformer किससे बना होता है? How the transformer is made up of? How the transformer is made up of? Soft iron, sir. या आयरन कोर होता है, उसके बाद में कॉपर वाइंडिंग Copper होता है. winding. हाँ. So जब करंट कॉपर वाइंडिंग में फ्लो होता है तो some amount of power will get dissipated, right? क्योंकि कॉपर वाइंडिंग का खुद का रेजिस्टेंस होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. So can I say that one of the loss in the transformer is due to winding loss, that is called as copper loss. And winding में जो loss हो रहा है, that we can represent it by power dissipated in resistor. Resistor is always consumes the power. So power dissipated in resistor is nothing but I square into R. Correct? Yes, sir. ये फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है. May क्यों vary, sir. वेरिएबल है? क्योंकि करंट जो है वो वेरिएबल है ना? इनपुट में कम करंट दूंगा तो कम लॉस, इनपुट में ज्यादा करंट दूंगा तो ज्यादा लॉस. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सेकंड लॉस कौन सा होता है आपका? Iron loss. होता है कोर लॉस. कोर लॉस मतलब क्या? कोर लॉस मतलब क्या? देखिए, कोर लॉस में हमने देखा एडी करंट जो है वो लॉस हो रहा है, बराबर है. ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस सम राउंड करंट्स विल बी देयर. वी कैन मिनिमाइज बाय यूजिंग द स्टैंपिंग, बट वी कैन नॉट मेक इट जीरो. यस. Yes, sir. एंड सेकंड लॉस इज योर हिस्टेरिसिस लॉस. कोर लॉस में दूसरा लॉस होता है हिस्टेरिसिस लॉस. हिस्टेरिसिस लॉस किसी को पता है? व्हाट इज हिस्टेरिसिस? कभी सुना है आपने ये वर्ड? Magnetism and demagnetism का सर कुछ है इसमें. हाँ, बोलिए फिर से एक बार कुछ. यस, यू आर करेक्ट. बोलिए, व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? यस. मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंक्रीज होता है सर तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा. क्या बोल रहे हो? If magnetizing force increases, then हाँ. flux will also increase. हाँ. Um, so उतना याद नहीं है अभी. Okay, so we will see in detail, no problem, but you are correct, right? Magnetizing demagnetizing की वजह से कुछ हो रहा है सर्किट में, so that will be considered as hysteresis loss, right? So that is the physics. Copper loss, right? Is it clear? Due to resistance of the winding, right? And power loss in this resistance is nothing but called as copper loss. Yes. So total copper loss is what? प्राइमरी में जो
लॉस हो रहा है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वो प्लस सेकेंडरी के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जो लॉस हो रहा है वो. सो I1 square R1 plus I2 square R2 is nothing but total copper loss. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now for minimizing this loss we have to use material with very good conductivity. उसका रेजिस्टेंस काफी कम चाहिए. तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो फिर कॉपर लॉस भी कम हो जाएगा. Yes, no. Yes, sir. Yes, ओके. sir. एडी करंट जो है ना उसके वजह से जो पावर लॉस होता है सो दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस. ओके. सो व्हाट इज टी हियर? व्हाट इज टी? टी हियर इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द लैमिनेट. सो जितना हम कम कम थिकनेस के स्टैम्प्स बनाएंगे राइट उतना हमारा लॉस कम होगा. सो दैट्स व्हाई स्टैंपिंग बनाते हैं हम लोग एंड देन वी आर इंसुलेटिंग इट एंड देन वी आर जॉइनिंग इट फॉर फॉर्मिंग द कोर. करेक्ट. Yes, sir. So you Yes. have to keep in mind power PE is nothing but power due to eddy current loss, and this is KE, Boltzmann constant. F frequency, BM is nothing but flux density in Tesla, and V is nothing but your volume of magnetic material. Correct? Yes, no? So how we Yes, can sir. reduce this loss? By reducing the Thickness of the thin lamination. Okay. And then third loss is what? This is your eddy current loss. This I guess you might have seen this thing. Yes, no? Yes, sir. ओके ओके. सो देखिए अगर हमारा एक आयन का पूरा एक स्लैब रहेगा सो इसमें एडी करंट लॉस ज्यादा रहेगा. अगर हमारे पास स्टैंपिंग्स रहेंगे सो ऑब्वियसली द एडी करंट लॉस विल रिड्यूस. करेक्ट. And then third one is your hysteresis loss, right? So hysteresis loss का सीधा फॉर्मूला दे दिया इन्होंने KH BM F into V BM raised to 1.6, right? So all the notations are as same. Okay. Now what is this loss? You know this BM and H. What is BM? Flux density, right? Now what is hysteresis loss? So the larger the loop, the greater the energy required to create the magnetic field. Okay. So this requirement is supplying energy to magnetizing core is known as hysteresis loss. Getting? Means what's happening, you know, when current electricity is in the winding, what will happen? It will form the magnetic flux loops, right? Due to that there will be some loss. That loss we call it as hysteresis loss. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. For magnetizing and demagnetizing it will take some energy, so the front path and return path that must be same, so that you know the hysteresis loss will be very minimum, but it will not be same. So this is, they have just given this to explain you what is hysteresis loop. But yes, what we can say, the larger is the loop, greater is the energy. So that's why we need to keep it the loop as very small as possible. What loop? जो आपका magnetic field है उसका loop, right? So simple, the hysteresis loss third which is happening in the transformer, that is given by this formula, right? So there are basically two losses in the transformer. One is your, yes, कौन सा है पहला loss? Copper loss, and second is core loss. Core loss, there are two types. One is eddy current loss and second is your hysteresis Hysteresis loss, loss. which is given by this formula. Okay, yes, no? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now total core loss कितना रहेगा आपका? टोटल लॉस कितना रहेगा? एक तो आपका पूरा आयरन लॉस रहेगा and second is your copper loss. Yes, no? So total losses in the transformer is nothing but, yes, core loss, that is I1 square R1 copper loss plus core loss. What is this core loss? This is PE eddy current loss plus दूसरा loss कौन सा था आपका? Hysteresis loss. Hysteresis loss. Hysteresis loss को हमने क्या बोला था? डिनोट कैसे किया था? PH बोल देंगे. pH. चलेगा? So total loss is eddy current loss plus hysteresis loss plus this is your copper loss, PCU. Okay? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है? Okay. So ये बन गए पूरे losses.
राइट. सो अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. आउटपुट पावर इज नथिंग बट इनपुट पावर माइनस लॉसेस. बराबर है. मैं ऐसा बोलता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू, चलो इनपुट जो कुछ पावर दे रहे हैं हम लोग वो सम पार्ट इज गोइंग इन लॉसेस and some part is going as output. So output power I can say it as input power minus losses. ये फॉर्मूला समझ में आया. Output power I am calling it as input power minus losses. Yes, no? Yes, sir. So Yes, that's sir. why efficiency neta can be defined as input power by input power, that is one separate कर लिया denominator को, minus losses by input power. समझ में आया? Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you know this is it. This is it. Transformer खत्म. Chapter ही खत्म हो गया. Any problem in this? No, sir. Simple था. Yes, sir. Yes, sir. Very very simple, right? And I expect that you should go on these YouTube videos. Very very simple videos. I have already shared this PPT with you. So please go through this video. One video we have already seen what is basic principle of working of the transformer and all that, right? And these two formulas you need to by heart. One is hysteresis loss, another is eddy current loss, and copper loss we can directly get from the formula, right? These are the losses in the transformer. So if we know the losses, we can find the efficiency of the transformer by simple formula. Voltage regulation, again I have told in a very simple manner, no load voltage minus full load voltage, and then you can derive the formula for voltage regulation. V1 minus V2 dash upon V1. What is V2 dash? It is nothing but V2 upon N1 by N2. Yes? Yes, sir. Sir, is Yes. there derivation required, sir? Huh? Derivation is required, or we may leave it. What? Derivation, sir. Can you repeat it one more time? What is required? Derivation of any formulas is required, or we may leave it. Yeah, derivation is given, na? In PPT, complete derivation is given. Yes, Okay, sir. है ना? आपको मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया कि हाउ दैट डेरिवेशन इज कमिंग, राइट? है No, ना? so I am asking that is it required to be learnt, or we may leave it. सी डेरिवेशन लर्न कभी नहीं करते, डेरिवेशन समझ के लेते हैं, राइट? Yeah, yeah, एंड yeah, sir. डेरिवेशन क्यों रहता है पता है क्या? टू प्रूव दैट यस दिस इज मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट. ओके, so Okay, always sir. go with the derivation. Whatever subject it is, you have to go with the derivation. Okay? Okay, sir. Yes. वैसे देखिए